Hello students, welcome to today's session. My name is Nishani Sahu and I'm gonna take you today's session which is based on some instrumental techniques. And in today's instrumental techniques we have three components, like first is NAA, that is neutron activation analysis, second is MS, that is mass spectrometry, and third is electrophoresis. Now, in today's session, we do not have to go in detail. This is not very much required unless it's a subjective paper. So, regarding neutron activation analysis and mass spectrometry, we are going to learn about the working, principle, instrumentation, apparatus, and mostly the examples and applications, sometimes limitations and advantages. And about electrophoresis, pretty much the same. However, these we have been studying from 11th standard. So electrophoresis will not have much to cover up, but neutron activation and mass spectrometry is a little bit new. So let's begin. So starting with neutron activation analysis, let's read the principle. Neutron activation analysis is a quantitative method for determining trace elements by irradiating sample with neutrons, making them radioactive, and then measuring the gamma rays. All right. It is a quantitative as well as it's a qualitative. Okay. It's quantitative and qualitative as well. Okay. Just remember that qualitative as well, because how it is qualitative, because it identifies what kind of elements are present in the sample, and also the elements that are present in the sample, they emit a characteristic energy, characteristic gamma rays. And why is it quantitative? Because it can determine how much of a trace element is present, okay, how much element is present, and because of the intensity of the gamma rays it can figure out. All right, so it's both qualitative and quantitative. So now in principle what happens, whatever sample we have, okay, this is our sample. All right, so let's say this is a sample. Okay, now we will bombard so many so many neutrons in it. Okay, two neutrons to it. Like our sample is in chamber and we will bombard it with lot of neutrons. So when we do that, okay, when we irradiate the sample with neutrons, the sample becomes radioactive. Okay, the sample becomes radioactive. All right, when it does that, this radioactive sample, it emit gamma rays, emit gamma rays. Okay, now your question is why it emit gamma rays? Because that sample that has become radioactive, it has excited. Okay, it has become an excited. So when it wants to come down to the ground state, it emits gamma rays. So let's say I'll type it here. So let's say radioactive sample wants to come back to ground state. Okay, that time when it comes back, it radiate or it emit gamma rays. When it does that, we can analyze this. We can analyze the intensity, okay? The intensity and characteristic value or characteristic radiance to figure out which elements are present in our sample. Now, why neutron activation analysis is powerful? It's powerful because we can element like 25 to 30 elements simultaneously. We get one sample and we can figure out 25 to 30 elements in that sample. Now the sensitivity is, yes, it can detect the element that are even parts per billion or parts per million range. All right. And neutron activation analysis is a non-destructive technique because we do not need any chemical separation. All right, so the samples after neutron activation analysis can also be used in another examination procedures. Works on geological, environmental, and
biological samples. This is also important. It works in geological samples, environmental and biological samples. Now, equipment and setup, first thing we have is neutron source, a source that helps to provide neutrons in the sample. Okay, so what happens here is we always have an NAA chamber, and it's very radioactive. So when you put inside the sample, okay, the neutrons are irradiated. Now, how it's irradiated? How we bombard it? Because we have neutron sources here. Okay, so that is called neutron source. Neutron source. All right. After a neutron source, now neutron source is present in the irradiation chamber. There's the entire chamber which holds the entire sample. Okay, we call it pneumatic tube or pneumatic chamber. It's like a capsule. We put a sample inside a capsule and we put it inside the chamber. Now, third is gamma spectrometer. Now, after bombarding it, whatever sample, okay, our sample whatever sample emit the gamma rays, okay, whatever gamma rays is emitted, we will detect that. So, gamma spectrometer measures the gamma rays emitted. And then in data system, we have a entire library of gamma rays characteristic values from which we can analyze the spectra. Now, processing steps. As I said, you do not need to know much about a neutron activation analysis for questions like in CUET or UGC NET. However, questions sometimes arise like what kind of neutrons are used, or they are highly thermal neutrons or not stable neutrons, or what are the applications? Is neutron activation analysis used in protein analysis, etc. So when we will be doing live classes, these such kind of MCQs will be also provided from the PYQs and the current topic. All right, let's begin. Processing steps. Sample preparation. First, we have to prepare the sample. Okay, we weigh the sample using polythene bags. We use analytical balance for precision. This is normal. This is just a general guideline. Now we prepare standards with micropipettes, and sample size should be 10 to 100 microgram typically. Now step 2 is irradiation. So we place the sample in pneumatic component. It's just a component, it's just a system in the reactor where we place our sample. So pneumatic system is what it have compressed air which help the system. It's act like an enzyme. Okay, it catalyzes, it speeds up the reaction. It uses compressed gas to transfer the sample quickly into the irradiation chamber. Now we will irradiate it for the specific time, like seconds to hours, how much ever time we require for the sample. Then we will get stable radioactive isotopes. All right, when the sample captures a neutron, we will get radioactive sample. That means the sample becomes a radioactive isotopes. And there are key parameters to check. That is how much irradiation time is taken. That is a TIRR. Then decay time, and then the counting time. Step 3. Gamma spectra measurement. Transfer the irradiated sample into gamma spectrometer. This is what I was talking about. So it's whenever the pneumatic system, okay, the pneumatic system has compressed gas, all right. So it helps in transferring the sample, the radioactive isotopes using the compressed gas. Transfer irradiated sample into the gamma spectrometer. We measure the gamma ray intensity. There is a detector called HPGE detector. It detects, identifies what are the gamma lines, and then it record the peak areas at the gamma lines. Okay, what are the peak areas at those gamma lines? Now there is data analysis. Identify the isotopes using gamma library. Whatever isotopes we found, let's compare it with the gamma library, and we find the peak areas. Uncertainty estimation. Calculate statistical uncertainties, report confidence intervals, and validate the certificate result. Okay, this is mostly whatever you think
ऐसा नहीं होना चाहिए था, but it happened, like peaks में this is a noise, maybe it happened because of handling error, maybe it's something else, it's not catching properly. So those uncertainty is also mentioned so that they can clarify it later on. Now let's see advantages and limitations. Now advantages is multi-element analysis. That means a lot of elements can be analyzed with this one single apparatus. It has high sensitivity, that means trace elements can be found. It is non-destructive because there is no chemical preparation required. It works on complex matrices and very minimal sample preparation is required. Weighing and preparing and just applying NA. Limitations are requires nuclear reactor. It is obviously expensive. It is a nuclear reactor after all. Radioactive samples are there, so it's very that carefree handling. I mean, carefully handling is required. Like someone is cleaning the reactor, someone is not cleaning the reactor. Everything is pretty much should be. I mean, the safety should be uh, checked at all times. Then there is long analysis times. Maybe it take hours, maybe it take days. You never know. It depends on the element of the sample. Limited to neutron reactive elements. Okay, now this is one limitation. Not every element can be figured out. Those elements that can become a radioactive isotope, those can be figured out. And it's a facility based instrument. It cannot be portable. It's not portable at all times. All right. Okay. So before that, before we go to the mass spectrometry, let me tell you some of the examples that I remember. Now, for example, there is a mattress sample. Okay. Now we got, for example, there are a lot of elements in it. But what kind of elements we can find out is sodium, gold, manganese, arsenic. These are some kind of examples, elements examples, which you can figure out, detect. And some applications are, it's used in forensic science. It's used to analyze the gunshot residue, okay, hair sample sometimes, glass fragments, soil and dust evidence, trace materials of poison, okay. In environmental analysis, we use mostly for air, water and soil pollution studies के लिए. Then composition of rocks, and sometimes in archaeology we use because we get some old authentic items and we want to know what is the origin of it, when it was made, okay. So those, and then biological and medical research, in that we use blood tissues and the elemental analysis from that part. All right. And sometimes it is also used in quality control so that we can check the material of metals and alloys that we are going to supply to the customers. All right, next we have mass spectrometry. Mass spectrometry is quite easy. What happens here is whatever sample you have, mass spectrometry, it quantifies it. I mean, it what it does is it converts that particular sample molecule into charged ions. Okay, it सैंपल को चार्ज आयंस में कन्वर्ट कर देता है. Then what happens, it measures the mass to charge ratio of that molecule ion, and then it is found, it is used to detect and quantify the molecules or quantify the okay. So ये इसका एक equation होता है where m is the mass, okay, z is the charge, and b is the magnetic field radius, and r is the radius, and v is the accelerating voltage. Now in इसमें क्या होता है, मेन वर्किंग आपको बता देती हूँ. ये आपका सैंपल मॉलिक्यूल है, ओके. आप इसको बॉम्बार्ड कर दोगे विथ इलेक्ट्रॉन्स. अभी एन डबल ए में हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रॉन. हियर वी विल, here what we will do, we will bombard it with the electrons. जब आप इस सैंपल मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉम्बार्ड करोगे, let me make it again. ये आपका सैंपल मॉलिक्यूल है, लेट्स कॉल इट एस. ठीक है, आपने इसको ढेर सारे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉम्बार्ड कर दिया. अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं या इसको कौन मैनेज कर रहा है, दिस इज एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड. जो कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रही है, इनको डायरेक्शंस दे रही है.
तो जब सैंपल इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड हो जाएगा तो इट बिकम्स चार्ज्ड आयन, ओके, मॉलिक्यूल्स में चार्ज बन जाते हैं, इट बिकम्स अ चार्ज्ड सैंपल, ऑलराइट, चार्ज्ड आयन, चार्ज्ड सैंपल। अभी जो चार्ज्ड आयन है फिर इसका एक मास भी होता है एंड एक चार्ज भी होता है, करेक्ट। तो जब ये होता है इसी को हम लोग, इसकी रेशियो को ही हम लोग फिगर आउट करते हैं कि क्या सैंपल हो सकता है। अब मेन चीज है डिटेक्टर भी होता है इसमें। अब डिटेक्टर किस लिए काम आता है, जो भी मॉलिक्यूल का बहुत ही लाइटर चार्ज होगा, सॉरी लाइटर मास होगा, ठीक है, बहुत ही लाइटर आयन होगा, ठीक है, इधर लिख देती हूँ, लाइटर आयन और हैवी चार्ज, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी होगा, दे डिफ्लेक्ट। तो जो आयंस डिफ्लेक्ट नहीं होंगे वो हमारे पास कलेक्ट होंगे एंड डिटेक्टर उसको रिकॉर्ड करता है एंड देन मास स्पेक्ट्रम से चेक करते हैं। अब मास स्पेक्ट्रम हम कैसे चेक करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं मास वर्सेस चार्ज का, ठीक है, एक हमारे पास ग्राफ होता है। तो जो एक्स एक्सिस होता है वो मास वर्सेस चार्ज रहता है एंड जो वाई एक्सिस होता है वो इंटेंसिटी होता है कि कितनी कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है, ऑलराइट। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली हमारे पास कौन से मटेरियल जो है वो हम फिगर आउट कर रहे हैं, ऑलराइट। इस एप्लीकेशन से बाद में पढ़ते हैं। इसके 3 मेन स्टेप्स है। पहला है आयोनाइजेशन, हम सैंपल को आयोनाइज करेंगे। सेकेंड इज सेपरेशन, we will separate the ions after ionizing them based on their mass by charge ratio. This is the only principle you need to learn. This is the working, this is the principle. Third is detection, we'll see how much ion abundance has not deflected and we can figure it out. Component देख लेते हैं। There is an ion source which creates the ions, okay. There is a mass analyzer which separates the ions. Now types also we can see, ion source could be electric field, it could be electric ionization, chemical ionization, then MOLG, and there are other types, okay. Mass analyzer we have quadrupole, TOF, ion trap. In detector we measure the ions, we have electron multiplier. In vacuum system it maintains a low pressure. In data system it processes spectra. Now there are ionization methods. See, electron ionization, molecules become charged, okay. It is very best for all the molecules that are small and they are volatile, okay. It's good for, the fragmentation is good for identification. The ESI, electrospray ionization, it's mostly for charged droplet ion, like solution wale molecules ke liye. Then whatever, if you're using protein, peptides, heavy material, heavy large molecules, then you can use electrospray ionization. Then MALDI, matrix assisted laser desorption ionization. It's like very, very large molecule. If you have DNA, proteins that is more than kilodalton, 100 kilodalton, then you can use MALDI. Okay, depends करता है. Now some of the mass analyzers you can see, quadrupole, time of flight, ion trap, and orbitrap. You won't get much question in it, so this is just for your knowledge. Now next we have electrophoresis. Before we move to electrophoresis, mass spectrometry के कुछ examples जो कि drug identification में use होते हैं, okay, mostly drug identification में narcotics identify करने के लिए, biological samples में आपने poisons, proteins, DNA तो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है, pharmaceuticals में बहुत ज़्यादा use होता है, these things you should remember, alright. अब आते हैं electrophoresis में। इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिंपल मीनिंग है कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो किस तरह से मूव करता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो प्रिंसिपल में इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स the charged molecules based on their different rates of travel throughout the electric field. So there is a charged molecule, we have provided the electric field, now we'll see कि वो किस तरह से सेपरेट हो रहे हैं अपने बेस्ड ऑन देयर रेट्स ऑफ ट्रैवल, और उनकी मूवमेंट किससे डिपेंड करती है, किस चीज पे डिपेंड करती है। पहली बात तो द मूवमेंट, ओके, डिपेंड्स ऑन चार्ज,
depends on size, okay, depends on shape of the molecule and strength. ऑल राइट, तो इन सब पे इनकी मूवमेंट डिपेंड करती है। इनके एक बार इक्वेशन देख लो, जहाँ पे v जो है वेलोसिटी है, q इज चार्ज, e इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड f इज फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। ओके, अब इसमें मेनली क्या होता है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं। बट देन हमें वही चेक करना होता है कि किस रेट में वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स तो मैंने आपको बता दिया, चार्ज, साइज, इलेक्ट्रिक फील्ड, बफर, टेम्परेचर। ये तो आपने देखा ही होगा डीएनए आइसोलेशन में, है ना, बैंड्स बनती है। अभी अगर मैं आपको डीएनए का एग्जांपल दूं तो जो डीएनए है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसका फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ ट्रैवल करेगा, है ना। तो वो जाता है डी नहीं डी तो डीएनए कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। अब जो स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो थोड़ा फास्टर ट्रैवल करते हैं, और जो लार्जर वाले होते हैं वो थोड़ा धीरे ट्रैवल करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्मॉलर वाले थोड़े आगे निकल गए और जो लार्जर वाले थोड़े पीछे रह गए, उससे एक बैंड्स क्रिएट हो जाती हैं, और वो बैंड्स हम लोग बाद में चेक कर सकते हैं कि कौन से बैंड्स हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लो, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सेल्यूलोज एसीटेट है, अगारोस जेल वाला सबसे ज्यादा यूज होता है। देन एसडीएस पेज भी काफी ज्यादा यूज होता है। अभी देखो अगारोस जेल वाला जो है ये डीएनए वगैरह के लिए यूज होता है, सीरम प्रोटीन्स डीएनए। एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है वो प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स के लिए होता है, सबसे एक्सीलेंट है, कम टाइम लगता है। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एज सच मैंने तो नहीं किया है, बट इट इज डन इन लॉट ऑफ लैब्स, पर इसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। इक्विपमेंट एंड सेटअप में देखते हैं, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई जरूरत है एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए। बफर मतलब जो मेंटेन करता है पीएच और वो कैरी करता है इन द करंट थ्रू आउट। सपोर्ट मीडियम होता है कि आप किसके ऊपर ले रहे हो, आप एक जेल के ऊपर ये कर रहे हैं, बैंड सब प्रोवाइड कर रहे हो कि पेपर है या कैसा मीडियम है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पर मोस्टली पावर सप्लाई, बफर एंड सपोर्ट मीडियम। ऑलराइट, कवर भी, ताकि उड़ ना जाए सारा मटेरियल, कवर करके ही हम उसको वैसे का वैसा रहने देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ताकि हमें बाद में बैंड दिख सके। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग देख लो। सैंपल प्रिपरेशन, अगर हमारे पास सीरम प्लाज्मा या न्यूक्लिक एसिड्स है या प्रोटीन्स है, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। लेट्स से हमारे पास सीरम या प्लाज्मा है तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, ठीक है। अगर न्यूक्लिक एसिड्स है तो हम मतलब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स है तो हम उसे सुक्रोज के साथ मिक्स करके ट्रैकिंग डाई डालेंगे। प्रोटीन्स है तो हम लोग उसे डीनेचर करेंगे और एसडीएस पेज यूज सॉरी एसडीएस के साथ डीनेचर करेंगे, विच इज अ डिटर्जेंट, ठीक है, ये डिटर्जेंट है। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट जो है उसके साथ, ठीक है, डोडेसाइल सल्फेट ये एक डिटर्जेंट है, इसके साथ हम प्रोटीन को डीनेचर करेंगे। जेल प्रिपरेशन, प्रिपेयर एगरोज और पॉलीएक्रिलामाइड जेल, add buffer to appropriate the pH and pour into electrophoresis tank। मोस्टली हम टीएई बफर या टीबीई बफर यूज करते हैं जिसका पीएच 8 to 8.5 होता है। सैंपल एप्लीकेशन, लोड द सैंपल इनटू द वेल्स। तो अभी एक कोम्ब होता है जिससे हम एगरोज पे एक वेल बनाते हैं, कोम्ब को ऐसे डिप करते हैं एंड देन वी टेक इट आउट वेरी केयरफुली, ताकि ऐसे हमें सिंपल सिंपल बैंड्स मिल सके। एक बार यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो ये आपका अगर जेल है, ओके, ये जेल है और ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। जेल आपका यहाँ पे बीच में है, बहुत केयरफुली यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया है। तो जो कोम्ब होगा उससे ऐसे ऐसे वेल्स बन जाएंगे, ठीक है, एक ही जगह, मतलब एक ही लाइन में प्रॉपर रेक्टेंगल वेल्स बन जाएंगे। तो उस रेक्टेंगल वेल्स में हमें प्रॉपर माइक्रोपिपेट यूज करना है, ओके, प्रोबेबली 5 माइक्रोमीटर, 20 माइक्रोमीटर ऐसे वाले। एंड उसको हम लोग आराम से इस वेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, हमारा जो भी सैंपल होगा उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस रन, अब हम उसमें अप्लाई करेंगे वोल्टेज 100 या 200 वोल्टेज वाला, एंड देन हम तब तक उसे रन करेंगे
जब तक जो ट्रैकिंग डाई है वो 80% ऑफ द जेल पे नहीं पहुंच जाता। जो ट्रैकिंग डाई होता है वो यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। जेल के स्टार्टिंग में ट्रैकिंग डाई होता है, जैसे मान लो ये वाला पूरा पोर्शन ट्रैकिंग डाई है, ठीक है। तो जब तक ये 80% ऑफ द जेल पे नहीं पहुंच जाता तब तक हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करते हैं। वरना अगर हम कोई रेफरेंस नहीं लगाएंगे देन हाउ विल वी फाइंड आउट कि कहाँ तक हमारे बैंड मैच कर रहे हैं। ओके, फिर जब 80% ऑफ द जेल पहुंच जाता है तो हम टर्न ऑफ कर देते हैं। एंड देन कई बार पता चलता है कि बैंड या तो मूव हुए ही नहीं है या फिर बैंड हुए हैं, ठीक है। फिर स्टेनिंग की बात आती है तो हम उसमें स्टेनिंग सोल्यूशन डालते हैं एंड उसे इंक्यूबेट कर देते हैं फॉर 15-30 मिनट, ताकि जो भी एक्स्ट्रा स्टेन है या कुछ है वो निकल जाए। फिर विजुअलाइजेशन में हम उसको मोस्टली अप्रोप्रिएट लाइट, यूवी लाइट के अंदर चेक करते हैं एंड हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी डेंसिटोमीटर से चेक करते हैं। फिर हम क्वांटिफिकेशन करते हैं जिसके अलग फॉर्मूलाज है, ऑप्टिकल डेंसिटी वगैरह हम चेक करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज की। सो जो दोज पीपल हु आर डूइंग जेनेटिक या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, दे हैव रेगुलर वर्क विद इट। एसडीएस पेज जो है ये प्रोटीन्स के लिए है, ठीक है। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट ये डीनेचर करता है प्रोटीन को एंड गिव देम अ यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज। जब मतलब प्रोटीन को अच्छे से, जैसे हम टॉक्सिकोलॉजी में क्या करते हैं, वी मिन्स द टिश्यूज सो दैट सारा पॉइजन उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें भी ऐसे ही होता है कि डीनेचर करता है प्रोटीन को ताकि सारे मॉलिक्यूल्स में सेम यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज हो जाए। तो जो सेपरेशन होगी वो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास के बेस में होगी। इसमें होता है आप प्रोटीन को बॉईल करते हो, आप एसडीएस डालते हो, ठीक है, मरकैपिथेनॉल डालते हो एंड देन प्रोटीन जो होता है वो डीनेचर हो जाता है। फिर एसडीएस बाइंड कर जाता है नेगेटिव चार्ज से, सारे प्रोटीन्स जो है वो चार्ज टू मास रेशियो में आ जाते हैं एंड देन स्मॉलर प्रोटीन्स मूव फास्टर थ्रू जेल, लार्जर प्रोटीन्स डू नॉट, ठीक है। ये इस तरह से ही है। इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें यही होता है कि हम ना इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला जो प्रोसेस है हम उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है किस टाइप के प्रोटीन्स है। अब मान लो पहले हमने प्रोटीन्स को जो है अपने अपने डीनेचर विनेचर करके सब कुछ इलेक्ट्रोफोरेसिस अप्लाई कर दिया। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया तब हमने उसमें एंटीबॉडीज डाल दिए। तो जो एंटीबॉडीज है वो तो अपने स्पेसिफिक प्रोटीन से काम जुड़ेंगे ही, मतलब प्रोटीन्स में एंटीजन है ना, तो वो तो स्पेसिफिक एंटीजन से जुड़ेंगे। तो जब स्पेसिफिक एंटीजन से जुड़ेंगे तो प्रेसिपिटेट होगा, और जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो प्रेसिपिटेट लाइन शो होंगी। जब प्रेसिपिटेट लाइन शो होंगे तब हम पता लगा सकते हैं कि कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब कौन सा प्रोटीन कैसे प्रेजेंट है डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की एंटीबॉडी दी थी और हमें पता है इस एंटीबॉडी से कौन से टाइप के प्रोटीन जुड़ सकते हैं। देखो स्टेप 2 एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। स्टेप 1 में क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो प्रोटीन्स को सेपरेट कर देता है। स्टेप 2 में क्या होता है, हम एंटीबॉडीज यूज्ड नोन एंटीबॉडीज को जान के मतलब डाल के यूज पता लगाते हैं कि कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है, अननोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट कर देता है एंटीजन को एंड मतलब प्रोटीन को डिफरेंस सेपरेट कर लेता है एंड इम्यूनो डिफ्यूजन जो है वो एंटीबॉडीज ऐड करके प्रेसिपिटेशन लाइन से आर्क लाइन से है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन बैंड्स या लाइंस, ओके, बैंड्स और लाइंस, तो उसकी वजह से हम प्रोटीन आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ ग्रैबर एंड विलियम मेथड, तो इन्होंने ये डेवलप किया था मेथड ताकि हम सीरम की अबनॉर्मैलिटीज को चेक कर सके, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, इम्यूनोग्लोबुलिन ये सब चेक कर सके, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन में जो प्यूरिफिकेशन वगैरह करते हैं तब भी इम्प्योरिटीज वगैरह डिटेक्ट करते हैं हम लोग। नाउ इक्विपमेंट एंड प्रोसेसिंग, ऑलराइट, इक्विपमेंट एंड प्रोसेसिंग। तो पहले तो हम एंटीजन मिक्सचर विच इज अ प्रोटीन, ठीक है। आप ये जब एंटीजन मिक्सचर की बात हो रही है तो प्रोटीन की बात हो रही है। लोड द एंटीजन मिक्सचर इनटू वेल ऑन एगरोस जेल, एगरोस जेल में जो आपको मैंने वेल बताया जो हम कोम से बनाते हैं वो। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, प्रोटीन जो है वो हॉरिजॉन्टली चार्ज टू मास रेशियो में, ये देखो चार्ज टू मास रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो जो इंडिविजुअल प्रोटीन्स होते हैं वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो इंडिविजुअल नहीं होते वो एक जगह पे हो जाते हैं। फिर अब हम ट्रफ बनाते हैं, कट लेटरल ट्रफ पैरेलल टू इलेक्ट्रोफोरेसिस डायरेक्शन
रिमूव द जेल फ्रॉम ट्रफ एरिया। अब जैसे कि जहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया ना, उतना एरिया ही अपने पास रखते हैं, रेस्ट हम डिस्कार्ड करते हैं या रिमूव कर देते हैं। फिर हम उस जितना एरिया हमें चाहिए उतने में एंटीबॉडीज ऐड करते हैं, ठीक है। फिल द ट्रफ विथ स्पेसिफिक एंटीबॉडी सोल्यूशन, जो आराम से जेल में डिफ्यूज भी हो सकता है एंड बाइंड भी कर सकता है। अब इंक्यूबेशन, फिर हम लोग थोड़ा डिफ्यूजन अलाउ करते हैं, 16 to 48 आवर्स हो सकता है, फिर हम उसको 37 डिग्री पे रख देते हैं। तो जो एंटीजन है वो एंटीबॉडीज के तरफ बढ़ता है एंड देन इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड। एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग एट इक्विवेलेंस पॉइंट, प्रेसिपिटेशन लाइन्स आर फॉर्म्ड, कर्व लाइन, एंड देन ईच आर्क इज वन एंटीजन एंटीबॉडी पेयर। आपको जितने भी आर्क्स लाइंस दिखे, प्रेसिपिटेशन लाइंस, दोज आर मीन्स दोज आर वन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब विजुअलाइजेशन की बात करें तो एक है स्टेन जेल। पहले तो आप प्रोटीन को स्टेन करते हो, फिर आप काउंट करते हो कि कितने प्रेसिपिटेट बने, फिर आप सिंगल आर्क से पता लगता है कि एक होमोजेनस एंटीबॉडी है। एंड अगर आपके पास बहुत सारे आर्क्स बन रहे हैं, इसका मतलब एक हेट्रोजेनस एंटीबॉडी है। होमोजेनस का मतलब होता है वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड हेट्रोजेनस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप, मल्टी टाइप ऑफ एंटी। डिटेक्शन मेथड देख लो आप। प्रोटीन्स के लिए क्वोम्ब्रेज ब्रिलियंट ब्लू कलर यूज होता है, जिससे ब्लू कलर के बैंड्स दिखते हैं। प्रोटीन्स के लिए सिल्वर स्टेन यूज, दूसरा होता है सिल्वर स्टेन, जिसमें थोड़ी ब्लैक बैंड्स दिखते हैं। डीएनए के लिए इथिडियम ब्रोमाइड बहुत ही ज्यादा कार्सिनोजेनिक है, ईटीबीआर। ओके, ऑरेंज दिखते हैं यूवी के अंडर। डीएनए है साइबर ग्रीन, ग्रीन ही दिखता है। इन जनरल पोंको एस। I have only seen the DNA one, that is ethidium bromide. Like I have properly did it, however, it was not did it, sorry, I observed it. तो एज अ इंटर्न, एंड वहां पे मैंने इथिडियम ब्रोमाइड का ही वर्किंग देखी है। तो मे बी इन अ लाइव क्लास समडे व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से किया था। एप्लीकेशंस देख लो। लिवर डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मोनोक्लोनल गैमोपैथी, these are the very bigger diseases and syndromes जिसमें ये इलेक्ट्रोफोरेसिस चेक की जाती है। ये नहीं आएगा आपके क्वेश्चन, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज। थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले आपको कुछ याद ना आए तो याद रखना कि पैटर्निटी टेस्टिंग में भी काम आता है, ठीक है। डीएनए बैंड्स चेक किए जाते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड सबसे ज्यादा याद रखो, इथिडियम ब्रोमाइड से क्वेश्चन आता है। देन ऑरेंज बैंड्स दिखते हैं यूवी के अंडर, एंड सीरम प्रोटीन डीएनए इनके लिए यूज रहता है। ओके, इस तरह की कुछ चीजें आप लोग याद रखो एंड आपका सॉर्टेड रहेगा। ओके, एंड ये इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हमेशा यही चीज जरूरत पड़ती है कि आपका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल याद रखो। फॉर्मूला इतने नहीं आते हैं एमसीक्यूज में, बट प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल से क्वेश्चन असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता है, ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन आ सकते हैं। देन वर्किंग ऐसा नहीं जानना है आपको कि अब क्या हुआ नहीं, एक फ्लो चार्ट में जो वर्किंग होती है वो आप नोट बनाओ। वर्किंग लिखो कि अभी सैंपल रेडिएशन है, फिर सैंपल रेडिएशन के बाद इल्यूमिनेट कह रही हो, वो आइसोटोप बन रहा है, फिर एमिट कर रहा है रेडिएशन एक्सेट्रा, ठीक है, फिर डिटेक्टर है। सब में इन सारे इंस्ट्रूमेंटेशन में यही चीज है, एक आईआर सोर्स है, एक डिटेक्टर है, एक ये है वो है। तो अब उसका एक फ्लो चार्ट बना के रख लो अपने पास। फिर आप अपैरेटस देख लो एक बार। अपैरेटस बहुत डिफरेंट यूज होते हैं, तो एक बार अपैरेटस देख लो क्या क्या यूज होता है। एंड एप्लीकेशन एंड यूजेस इंपॉर्टेंस ये देख लो। इंस्ट्रूमेंटेशन आपका बहुत इजीली आराम से कवर अप हो जाएगा। Okay, thank you. I'll see you in the next session. Bye.